Hello students, today we are going to cover the third part of the chapter electricity. In this, today we will learn the rest part left, that is the main, we will focus on the applications of heating effect. So in this we will see how all the appliances which we use at our home like electricity fan or electric bulb, or we can say that electric kettle, oven, iron, or all the appliances, how they are useful and how they produce electricity, how in electric bulb and electric energy is converted into heat energy and light energy. And we will also learn about electric fuse, how this fuse helps us to save our appliances. And after that we will study about the Joule's law, what the Joule's law say about the heating effect and how it is a most important application of a electric current. And next we are going to study about power, what is power, and we will do a short numericals on it. So let's start. So today we are going to talk about heating effect of electric current. So as I have told in my all the lectures, and you all know that electricity is so important part of our life. We use fan, the mobile, the refrigerator, AC, or the heaters we use in our house, or even our mobile. Everything requires electricity. So electricity has been a very important part of our life. So there are many uses of electricity. Out of that, one use is also the heating effect of electric current. So there can be many effects of electric current, but in this chapter, in this class, we will only study about the heating effect of the electric current. So there are many other effects of electric current, I must tell you. So there can be heating effect, okay, magnetic effect, or chemical effect of electric current. Okay, but in this class we are going to study only about the heating effect of electric current. So if we revise our previous lectures, you have seen my previous lectures, or if we revise about the previous session, you all know that different devices uses different effects of the operations. So what happens basically is that we know that the points which we need to remember is that ki either a battery or cell, okay, all are the source of what? Which energy? Electrical energy. Fine. Okay, then next what we got to know that the chemical reaction within the cells, सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, ओके, केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल, वो क्या करते हैं? दे जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, वी हैव स्टडीड अबाउट इट, वी हैव स्टडीड ऑलरेडी. ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज V, the potential difference generated because of the chemical reaction occurring within the cell or a battery. We have already read about V, that is the potential difference, okay, in between the two terminals, we can say that. Or now what happens, this is because of the potential difference, the electrons, I have already discussed about this in my part 2 of electricity chapter, that the electrons are in motion to flow the current through a resistor or a system of resistor connected to the battery. So this potential difference makes the electron, the randomly flowing electrons, to move in the positive direction from negative to positive. Okay, it is because of the potential difference. And the third very important thing which we have studied is in order to maintain the current in a given electric circuit, okay, any electric circuit is there, suppose we have gone through many electric circuit.
So in order to maintain a current means I. Okay, order to maintain the current in a given electric circuit, this cell has to expend its chemical energy stored in it. अब क्या होता है, जो सेल, जो भी बैटरी या सेल लगी हुई है, उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी स्टोर्ड है, what is CE, chemical energy stored है, it has to expend its chemical energy. Okay, fine. Then what happens, if you see here कि a part of source energy in maintaining the current may be consumed into useful work, okay, like in rotating the blades of an electric fan. Okay, so from the electricity, the fan is revolving, rotating its blade, so the energy can be used in that. Okay, so the big question is, where does this energy goes? So rest of the source energy may be expended into heat to raise the temperature of the gadgets. So for this, a very best example you can see in your home also. If you keep on your fan is on full day, what happens? It gets warm. Why? Because of the continuous or longer use. So for example, an electric fan becomes warm if used continuously or for longer time. Okay, so we can say that when an electric current flows through a metallic conductor, it gets heated up, and this effect is called heating effect of electric current. तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, किसी भी कोई भी, जैसे सपोज करिए एक मेटेलिक कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी. कब फ्लो करेगी? जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे किधर? अपने पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे निगेटिव से. सो क्या होता है तब? एक हीट, ये जो कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, ये मेटेलिक कंडक्टर सॉरी, वो हीटेड अप हो जाता है, और इसी हीटिंग को या इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, so if we consider a current I flowing through a resistor of resistance R, so here I am making resistance R is there. Okay, and you can say that here a battery is attached. Fine. Here is the ammeter to measure the current. Here I will write A. Okay, just a minute. Okay, here is ammeter just to measure the current. Here is the ammeter whose symbol is A. Okay, and current I is flowing. I is the current flowing. Here I will connect between two terminals V, voltage V. Okay, so here is V voltage. Fine students. So here it is said that resistance R is there. R is the resistance, I is the current. Here I have shown I is the current flowing throughout the conductor, and let the potential difference across it be V. V is the potential difference between these two points.
Suppose we name it as a x and y. Let t be the time. Now we are considering t as a time during which a charge q flows across. Okay. So time t has been taken for a charge q to flow across. So if we want to find the work done in moving the charge q, how much is the work done in moving the charge q? Okay, so one more thing I would like to tell you, that if suppose the current is I, okay, the resistor is R, the potential is V. First we will make all these things, then it will be easy for us to remember. The time taken was T and the charge here it is mentioned is the Q. Okay, so now when I will derive the equation, it will be easy for you to understand. So we can say that the work done in moving the charge q through a potential difference V is VQ. Fine, VQ is the work done. So VQ is the work done. Okay, so the source must supply energy equal to VQ in time t. Okay, hence the power input to the circuit by the source is P is equals to V by VQ by T. Okay, and we know that since Q by T is equals to I, so we will say that power supplied P, power input will be QVI. Okay, P is equals to VI. P is equals to VI. Did you got to know how this came? Yes. And we know that the energy supplied to the circuit by the source in the time t is PT. Okay, means the energy is equals to power into time. Okay, so power into time means E is equals to energy is equals to P into T is the time. Okay, here it is mentioned that P into T, that is VIT. How come? We know that here we have found that P is equals to VI. So if we put the value of P here, so E is going to be P is equals to VI into T. So E is going to be VIT. Fine. Here also it is written VIT. Okay, students. Now what happens to this energy expended by the source? Okay, we need to find this energy expended by the source. So we will find that this energy gets dissipated in the resistor as heat. Okay, thus for a steady current I, the amount of heat H produced in the time is, now we need to find the heat produced H. Okay, so H is equals to VIT. The amount of heat produced is equal to VIT, potential difference into current into the time taken. Okay, so this we will consider as equation 1. H is equals to VIT. Now we will apply this equation in Ohm's law. So let's see what result we get when we will apply in Ohm's law.
So the equation 1 which we have made, that was H is equals to, that is the heat produced, H is equals to V I into T. Suppose this is equation 1. Now we will substitute, and we know that Ohm's law is equals to V is equals to I R. This is what? This is the Ohm's law. Fine. Now we will be substituting this Ohm's law value, that is V is equals to IR, into the equation 1, that is H is equals to VIT. So H will become, H is equals to, according to Ohm's law, V is equals to IR. So V, instead of V, we are going to put IR into IT, into IT. Okay, IR into IT. So this becomes I square RT. There are two I, 1 and 2, I square into RT. H is equals to I square into IT. This should be up, I square. Okay. So this is known as the Joule's law of heating. What does Joule's law of heating says? So the law implies that heat produced in a resistor, that is H, heat produced in a resistor H, is directly proportional to the square of current for a given resistor, is directly proportional to the square of a current for a given resistance, that is H is directly proportional to I square. Okay, then is directly proportional to the resistance of a given current, that is H is directly proportional to R, resistance of a current, that is R. And the heat of resistance, heat produced in a resistor, is directly proportional to the time for which the current flows through the resistor. So H is also directly proportional to T time. Okay. So what we get to know from Joule's law of heating? Joule's law of heating says that H is proportional to I square, H is directly proportional to R resistance, and H is also directly proportional to the time T. Okay, time for which the current flows through the resistor. Let's see some of the practical applications of heating effect of electric current. Okay, so where these heating effect of electric current are applied, as we all very well know that the electric current gets converted into heat energy when it is passed through an electric stove or an oven, and these electric current gets converted into radiant energy in a bulb. Everybody uses bulb in our house, so we know that the electric current gets converted into radiant energy in a bulb, and we know that the electric current gets converted into chemical energy when a storage battery is charged. So these can be a common application of heating effect of electric current. So the generation of heat of a conductor is unavoidable consequence of electric current. Okay. So in many cases it is undesirable as it converts useful electrical energy into heat. So what happens? The useful electrical energy, these electrical energy gets converted into heat. Okay, we will see the examples also. So in electric circuit, the unavoidable heating can increase the temperature of the component. कोई भी component हो, अगर उसमें बहुत ज़्यादा heating हुई तो इससे क्या होगा कि there is a increase in the temperature,
and what happens, it alters their properties. It is going to change the property of that particular component. However, heating effect of electric current has many useful applications. अब क्या होता है कि ये जो हीटिंग इफेक्ट है किसी इलेक्ट्रिक करंट में, इनके बहुत यूजफुल एप्लीकेशंस भी हैं, रादर देन दैट कि इट अल्टर्स द प्रॉपर्टी. अब लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक oven is there, electric kettle or electric heater. All these instruments we use at our house, and we are very familiar with these devices, and these are based on Joule's heating. So I have told you what is Joule's heating. We have already read about Joule's heating. So what was Joule's heating? Was H is equals to I square RT. H is equals to I square RT. So these are the common appliances. This electric iron, if you say, electric kettle is there, electric cooker is there, oven, immersion rod and all. So these all are made up of what? They are made up of nichrome wire. Okay, they are made up of, all these examples which I am telling you are made up of nichrome wires. So what happens basically in case of nichrome wire, it offers, the property of nichrome is that it offers high resistance to the flow of current. What it offers? High resistance, that is R. R is going to be high resistance to flow of current. Then also what happens, it has a high melting point. Fine. So these are good examples, and further also we will see. So another very good example is the light or a bulb, electric bulb, which we use in our house. Everybody uses bulb in the house. So it is a very good example of heating effect. So let's see. The electric heating is also used to produce light as in an electric bulb. Okay, so here what happens, the filament must retain as much as of heat generated as is possible. जो फिलामेंट, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें यहाँ पे फिलामेंट्स लगे होते हैं, तो वो क्या करेगा कि वो रिटेन करेगा हीट जनरेटेड एज इज पॉसिबल. सो दैट, क्यों करेगा? सो दैट इट गेट्स वेरी हॉट एंड इमिट्स लाइट. तो क्या होगा कि हीट को वो अपने अंदर रिटेन करेगा, अपने अंदर रोक के रखेगा, जिससे कि वो बहुत हॉट हो जाएगा. और क्या होगा कि फिर फाइनली यहाँ से इलेक्ट्रिक बल्ब से लाइट जलने लगेगी. इट मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर. तो फिर उसकी वही प्रॉपर्टी आई कि वो मेल्टिंग पॉइंट वाला, हाई मेल्टिंग पॉइंट को रिटेन करेगा, क्योंकि इट इज़ नॉट गोइंग टू मेल्ट एट हाई टेम्परेचर. अब जनरली होता क्या है कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हीट कर दीजिए तो पता चला कि वो गल गया, मेल्ट हो गया, बट इट इज़ नॉट द केस in here in if we talk about the electric bulb. Okay, so a strong metal with high melting point such as tungsten. अब होता क्या है कि ये मेल्ट क्यों नहीं करता है बल्ब, और जबकि जब बहुत गर्म हो जाता है तो हीट रिटेन करके वो बल्ब जलता है, बल्कि मेल्ट नहीं करता. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बल्ब में क्या लगा रहता है, एक टंगस्टन लगा रहता है, और इस टंगस्टन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत हाई होती है. इतनी हाई मेल्टिंग पॉइंट है कि ये उससे पहले उस पॉइंट तक जब तक पहुंचेगा नहीं तब तो ये मेल्ट ही नहीं होगा. सो मेल्टिंग पॉइंट इतनी होती है 3380 डिग्री सेल्सियस फॉर मेकिंग द बल्ब फिलामेंट. तो बल्ब में टंगस्टन लगा होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है 3380 डिग्री सेल्सियस. इसलिए बल्ब बहुत ज़्यादा हीट होने के बाद भी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बल्ब हीट भी हो गया, लेकिन वो क्या देगा? लाइट देगा, वो मेल्ट नहीं होगा. अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपने देखा होगा कि कभी कभी बहुत तेज़ लाइट आई अचानक से घर में, तो एक दो बल्ब फ्यूज़ हो जाते हैं. ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि तब क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट ये डिफाइंड है टंगस्टन की, उस टाइम बहुत तेज लाइट आती है और इस मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर चला जाता है जो टेम्परेचर होता है, तब बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू बी फ्यूज ऑन द रेगुलर basis. So the filament should be thermally isolated as much as possible. अब इसमें क्या करते हैं, इसको थर्मली आइसोलेट करते हैं। कैसे करते हैं? दिस इज डन बाय इंसुलेटिंग सपोर्ट। एक इंसुलेटिंग सपोर्ट दिया जाता है फिलामेंट को। So the bulb are usually filled with chemically inactive nitrogen argon gases टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ अ फिलामेंट। अब होता क्या है कि ये जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं, इनके पास कुछ केमिकली इनएक्टिव गैसेस होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है और आर्गन है। अब इससे क्या होता है कि ये जो गैसेस हैं, ये क्या करती हैं कि जो फिलामेंट है, फिलामेंट जो बल्ब है, ये बल्ब में ये जो फिलामेंट्स लगे होते हैं, इनकी लाइफ को बढ़ा देती हैं। Because of these gases, the life of the filament gets increased. अब now what happened? Most of the powers consumed by the filament appears as heat. अब क्या होता है, जो भी पावर, जो भी टेम्परेचर बढ़ रहा है या जो पावर फिलामेंट कंज्यूम कर रही है, वो कैसे अपीयर होगा? हीट की तरह अपीयर होगा। ओके, बट a small part of it is form of light radiated. अब क्या होता है कि हीट तो जनरेट होती ही होती है, उसी हीटिंग की वजह से क्या होता है कि ये लाइट भी निकलती है बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन बल्ब इज कन्वर्टेड into heat energy as well as light energy. Okay, light energy. फाइन। सो नॉर्मली क्या होता है कि हीट एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिव्स ओनली हीट एनर्जी। ओके, here heat H is extra. Okay, normally heat energy क्या, electrical energy gets converted in heat energy, but if we talk about the electric bulb, the electrical energy gets converted into heat energy as well as the light energy. इसीलिए electric bulb में light जलती है। Okay, so after electric bulb, a very common example of the application of Joule's heat is the electric fuse. Okay, electric fuse. So basically what happens कि wire consisting of some material melts quickly and break when large electric current passes through it. अब क्या है कि कोई भी वायर है, सपोज करिए, तो उसमें जब भी थोड़ी सी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो वो मेल्ट हो जाएगा, और जो है कि मतलब कोई भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो इट गेट्स मेल्टेड। तो इसलिए क्या होता है कि दीज वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस, इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज लगे होते हैं। ओके, सो दीज वायर्स आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेस। All electrical circuits in all buildings consist of electric fuse. तो हर जगह इलेक्ट्रिक फ्यूज जरूर लगा रहता है, जिससे कि जैसे ही लार्ज इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हो और फ्यूज कट डाउन हो जाए और मेल्ट होने से बच जाए। तो देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। बाय एनी एक्सीडेंट, कोई भी एक्सीडेंट अगर मान लीजिए होता है, द करंट एक्सीड्स दिस लिमिट। अब कोई लिमिट है कि हाँ इसमें इतनी ही करंट, इतने ही एम्पियर की करंट फ्लो करनी है। अब क्या हुआ कि कुछ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, कभी हाई वोल्टेज हो गया या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से करंट जो है कि एक्सीड कर गया, आई अपने लिमिट से
एक्सीड कर गई, ओके, देन व्हाट हैपेंस, तो द वायर में गेट ओवर हीटेड एंड कॉज अ फायर, तो उसके कारण क्या होता है कि फायर लग जाएगी या वायर ओवर हीटेड हो जाएगा। तो फिर इसलिए हम लोग यूज करते हैं फ्यूज को। दैट्स वाई इफ अ प्रॉपर फ्यूज इज देयर इन द सर्किट इट विल ब्लो ऑफ एंड ब्रेक द सर्किट। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फ्यूज का बेसिक पर्पस क्या है, किस लिए लगाया जाता है, जिससे कि कोई भी एक्सीडेंट हो, जैसे कभी हाई वोल्टेज हो गया या किसी भी वजह से हाई करंट फ्लो होने लगा, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम है कि वो कट कर देगा, इट विल ब्लो ऑफ, और सर्किट जो इलेक्ट्रिक करंट की फ्लो हो रही थी उसको ब्रेक कर देगा। तो कोई भी एक्सीडेंट लाइक कि फायर कॉज हो जाए या कुछ हो जाए, उससे हमें इलेक्ट्रिक फ्यूज बचाता है, ओके। सो देखते हैं क्या लिखा है कि इट प्रोटेक्ट सर्किट्स and appliances by stopping the flow of any excessively high electric current। जैसा कि मैं अभी बताई हूँ आपको, इसमें क्या होता है कि ये प्रोटेक्ट करता है एक तो सर्किट को भी, और दूसरा ये किस लिए भी, जो भी हमारे अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज जहाँ भी लगा हुआ है, जो भी अप्लायंसेस हमारे हैं उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि हमारे अप्लायंसेस जले ना। सो द फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द device. It consists of a piece of wire made up of metal or an alloy of approx melting point। तो अब क्या होता है कि ये क्या होता है, फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो क्या होता है, ये फ्यूज बना हुआ होता है एक पीस ऑफ वायर का, जो कि या तो मेटल का होता है या अलॉय का होता है, और इसको क्या करते हैं, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है उसको बहुत हाई रखते हैं, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट को हाई रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टेक एल्युमिनियम है या कॉपर है या आयरन है या लीड है एक्सेट्रा। सो इफ अ करंट लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब क्या है कि कोई सर्किट है सपोज करिए, और उसमें करंट आई जो फ्लो करेगा वो बहुत ज़्यादा होगा, लार्जर देन द स्पेसिफाइड वैल्यू, तो क्या होगा कि द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज वायर इंक्रीजेज। अब फ्यूज जो है वो भी किसका बना होता है, वायर का, आपको मैंने बताया, तो वो उसका टेम्परेचर जो है कि इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस मेटल, द फ्यूज वायर ब्रेक्स द सर्किट। सो द फ्यूज इज यूजुअली encased in a cartridge of a porcelain or similar material with metal ends. The fuses used for domestic purpose are rated as 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, 5 ampere, 10 ampere। जो हमारे घरों में यूज होती है फ्यूज, वो इतने एम्पियर्स की होती है, 1 ampere, 2 ampere, 3, 5 और 10 ampere of current of 1000 by 220 volt, okay, and that is 4.54 ampere which flow in the circuit, or in this case a 5 ampere fuse must be used, okay। So the purpose of a fuse is just to save our appliances. It is because of the fuse that our appliances get saved when there is a flow of high electric current. So we have seen two examples, one of electric bulb and the other of electric fuse. Similarly, there are many other examples like electric iron, electric geyser or electric heater. All these are comes under the appliances of Joule's heating, and basically this is because of all of them are made up of a component that has a high melting point। अगर melting point उनकी high है, इसलिए अगर टेम्परेचर करंट हाई भी होता है तो वो रेजिस्ट कर जाते हैं, दे डू नॉट मेल्ट, ओके। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ जूल्स हीटिंग के एप्लीकेशन के अंडर में आते हैं, ओके। एंड द लास्ट टॉपिक of this chapter electricity is electric power. So what is electric power? The rate of doing work is called as power, okay। जिस रेट से किसी भी चीज की काम हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, पावर, ओके।
तो अगर हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में भी देखें तो क्या पावर को हम क्या डिफाइन करेंगे? अगर कोई आपसे पूछे कि पावर क्या है, किसी भी चीज़ में कोई भी काम आप करते हैं तो उसमें पावर लगाते हैं, तो जो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज पावर. और वी कैन ऑल्सो से दैट कि द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, किसी भी काम को करने में एनर्जी कंज्यूम होती है. ओके, उसका क्या रेट है? जैसे आपको कोई भी XYZ आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो उसमें भी आपकी एनर्जी लॉस हो रही है. ठीक है, कोई भी काम, इफ यू आर रनिंग देन एनर्जी, यू आर लूजिंग एनर्जी. सो देयर इज अ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज पावर. किस रेट से एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? इट्स कॉल्ड एज power. Okay, so if we see according to Joule's law, the rate at which electricity is dissipated or consumed is in an electric circuit. अभी जस्ट हमने पढ़ा था इसके पहले that Joule's law क्या बताता है हमें? Gives the rate at which the electric energy is dissipated or consumed in an electric circuit. Okay, so what happens that if we want to calculate a powers, this is termed as electric power. उसी को हम इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे. जूल्स लॉ क्या बोलता है? H is equals to I to the power 2I square R T. ओके, T टाइम में जो रेट ऑफ एनर्जी मिला, तो दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर. अब द पावर P इज गिवन बाय, पावर P को हम किससे डिनोट करेंगे? पावर को किससे डिनोट करेंगे? P से. तो P इज इक्वल्स टू VI. ओके, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यू नो दैट V is equals to Ohm's law say that V is equals to IR. This is what? This is Ohm's law. Okay, Ohm's law says that V is equals to IR and power P is equals to VI. So if we put the value of V in this power P is equals to VI equation, suppose this is equation 1 and in this we are going to put the value of Ohm's law, that is V, then P is going to be, P is equals to, V stands for IR, so and into I, so here it becomes P is equals to I square and R. Okay, this only we are getting here, P is equals to I square R. So how we got this? By putting the value of Ohm's law, that is V is equals to IR in this equation. In this power P is equals to VI, we put the Ohm's law equation, that is V is equals to IR. So if we talk about the SI unit of electric power, it is watt. Okay, SI unit of electric power is watt and it is denoted by capital W. It is the power consumed by a device, किसी भी डिवाइस में जो पावर कंज्यूम हो रही है, and that carries 1 एम्पियर ऑफ करंट. I क्या है? जो करंट कैरी हो रही है वो कितनी है? 1 एम्पियर. I is equals to 1 एम्पियर. When operated at a potential difference of 1 V. Okay, potential difference V is equals to 1 volt. V is also 1 volt and I at 1 ampere is called as the power consumed. So from this equation we will get that 1 watt, if we want to calculate 1 watt, that is the power is equals to 1 volt potential difference into 1 ampere. Okay, 1
A. तो 1W is going to be 1VA. Okay, so 1 watt is equals to 1 volt into 1 ampere. Okay students, now what happens, the unit watt, पावर की यूनिट को हमने क्या बताया, वो वॉट है, बट दिस यूनिट इज वेरी स्मॉल. तो what we do in actual practice, we don't consider watt as a unit. What we considered kilowatt as the unit of power. So what is written here, the unit watt is very small, as I have told you कि watt की unit जो होती है, sorry, power की unit watt जो है वो बहुत ही small है. Therefore in actual practice we use a much larger unit called kilowatt. This is kilowatt. तो क्या होता है कि जब हमें कोई भी कैलकुलेशन करना होता है तो we use the unit kilowatt, since watt is a very small unit. It is equal to 1000 watts. तो 1 kilowatt, if we talk कि 1 kilowatt is equals to 1000 watts. Okay, this is the relation between kilowatt and watt. 1 kilowatt is equal to 1000 watt. फाइन. अब क्या है, सिंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो जनरेट हुई वो दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज देयरफॉर वॉट आवर. ओके, वॉट आवर, अब हम उसको यूनिट को मानेंगे क्योंकि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टाइम, कि कितने टाइम में कंज्यूम हुई एनर्जी. सो इट इज कंसिडर एज वॉट आवर. सो इफ वी टॉक अबाउट 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. Okay, 1 watt hour is the energy consumed when 1 watt of power is used for 1 hour. कितनी देर के लिए यूज हुआ, 1 hour के लिए, और पावर कितनी यूज हुई, 1 watt. तो द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर. अब हम अगर कमर्शियल यूनिट देखें तो किलोवाट आवर हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट. ओके, जिसको कि हम कॉमनली क्या बोलते हैं, वही जो मैंने आपको बताया, किलोवाट आवर. 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 watt इंटू 3600 सेकेंड्स. अब हम उसको आर को सेकेंड्स में कन्वर्ट करके हमें क्या मिला कि 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 1000 watt into 3600 सेकेंड. फाइन. सो अगर अब हम इसको कन्वर्ट कर दें सेकेंड को, वॉट आवर, तो 3 पॉइंट मतलब आई मीन कि ये ज़ीरो को हम एक कर लें तो 10 to the पावर, ये पावर 6 है बेसिकली, दिस शुड बी 10 to the पावर 6. ओके, तो 3.6 इंटू 10 to the पावर 6 वॉट सेकेंड. और अगर हम इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एच वाली वैल्यू में ले आते हैं, तो इट इज गोइंग टू बी 3.6 इंटू 10 to the पावर 6 जूल. So finally what we got, that 1 kilowatt is equals to how much, 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joule. Okay, the unit of it is power is going to be joule. Okay, so let's do some numericals to get a clear concept of power. Next activity we will do a numerical to understand about power. Suppose there is an electric bulb connected to a 220 volt generator. Okay, so V is equals to 220. Just a minute student, I will write it here.
V is equals to, V is given as, V is equals to 220 volt. Then comes K, the current is 0.50 ampere. What is the current A? If we talk about current I is equals to 0.50 ampere. Fine. Now what we have to find? We have to find the power of the bulb. तो we know that power is equals to, अभी इक्वेशन आपको पढ़ाया था, P is equals to VI. Okay, fine. So here V is given. So if we want to find P, V is given 220 into what is given? I is given as 0.50 ampere into 0.50 ampere. So on multiplying, what we get? 110 joule per second. ओके, और जूल पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? वॉट. तो 110 watt we can say. So here we can say that the power consumed is 110 watt to generate 220 volt potential difference when the current is 0.50 ampere. So it is clear to all of you. Thank you so much for watching my video. It was the electricity part 3 and the electricity chapter completes here. Students, if you have any doubt with any of the numericals, since the chapter is full of numericals, you can please log in to our website www.ollyscholar.com, or you can mail us at ollyscholars.com @gmail.com. So there we will be solving you all the queries regarding the chapters and all. So thank you so much. Please like our video, and if you have not subscribed the channel yet, please subscribe it so that you can get the daily updates of our video on the daily basis. Okay, thank you so much. Please do not forget to subscribe our channel. Thank you.